ହେଲାନି ହେଇନି ଏଇଟା ରିଚାର୍ଜ କରିବା କହୁଛୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବା ହଜି ଯାଉଛି ନା ହଜି ଯାଉଛି ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ହଁ 5G ହେଲେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ 239 ରିଚାର୍ଜ କରିଦେଲି 49 ବେଶୀ 349 ତ ମାନେ ତାদের 5G ବି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ତାମାନେ 5G ହେଲେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ କରିଦେଲି ଯାହା ହଉ ସେ ସମୟଟା ମିଳିଗଲା ଡନ୍ ସ୍କୋର ପକା ଟିକେ ହଲେଇ ପଡ଼ିବ ମାପଟା ପୁରା ଚାରିଟା କେବଳ ଦରକାର ଚାରିଟା କରିଦେଲେ ଚାରିଟା କେବଳ ଆରାମସେ ଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ଆମେ କରିଦେବା ଅଡ଼ିଓ ସିଷ୍ଟମ କରିଦେଲେ ଆସୁନାହିଁ ହେଇଯିବି 126 to get in those 220 overs for the Titans to hold the trophy, hold the Winners' Trophy. As we know that the Super Kings did really well with the bat to get to 126. Can they reciprocate that with the ball? That's the question out there.
आइला नि लाइन आइला आज ଏଇଠି ସେ ଗୁରା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ହାତ ମାରିବୁ This is Sanjay Mahanti who will be facing the first ball. Bhagav will be starting the proceedings with the ball. 1-2-6 is the target. Might look like small with the kind of scores we witnessed today, especially yesterday. In a T20 match, the kind of score we got. Almost the pitch looked like a runaway. मोबाइल चालू First ball of the second innings. Here we go. Full toss. Hits that in the gap. No, that is protection there. Only a single, but that will be the first run on the board in the second innings. They know that this is a match where we really can be sensible and win it. You don't need to go to the fifth gear to make sure get something from this to make your team go over the line. If you can be a little sensible, really can win this match. Oh, right on the line, a defensive shot. And a shot that tells you while he's watching the ball, well, watch a single from it. I tell you what, there's no single there. There's only run out there. So no run from it. This is an exciting phase of play in those initial overs. There's a little temptation from the batters to go for the big ones. There is power play there. But on the other side, they know that you don't really need that. We wanted to hit it on the onside, didn't quite manage to get it. The whole team will be not getting an inch, I can tell you, because in the first innings you saw some remarkable performances with the bat. The story will continue in the second innings, I can tell you. This Dreams Premier League has been superb so far with the kind of excitement we've got, especially with the kind of support we've got for Dreams. Oh, he flicked it over the fielder's head. That's a well thought out shot in a power play. Takes a single, goes back to the other end. Imagine that being timed that well and the outfield's been on the faster side. That could have been a boundary. This kind of shots normally gives you runs when there is something in the path, in this outfield for the batters. This is definitely not the case. Just to balance things out, the outfield says, all right, today I'll not be the friends. Here we go. As Vaibhav continues, this has been good so far from Vaibhav. Right in the morning, this is accurate, absolutely accurate, almost like a message to the batsman. If you want to go over the top, you really can, but you have to make sure you hit it as straight as possible. Little here and there, without Bidden just waiting for one of those mistimed runs. A little odd bounce, I can say, extra bounce from the bowler, something that you get from this wicket. We did mention that in the pitch report that the extra bounce will come into play as this is a terrific over for the bowling side that comes to an end. The first over is done and dusted. It's 2 without a wicket. And it's time to welcome Mr. Pavitra Rai to the comp box. बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, अभिनंदन, अभिवादन। कमाल की माहौल इस समय जिस प्रकार की स्टार मिला है उस स्टार को चाहेंगे कंटिन्यू करने के लिए, मगर 126 रन का जो टारगेट है और इस प्रकार की दूसरा इनिंग्स में दबाव डालेगा आने वाले वक्त में, मगर गेंदबाज में परिवर्तन और गेंदबाज का भार संभालेंगे इस समय। संजय विश्वास स्ट्राइक में देवी का कोटा का पहला ओवर दल के ऊपर दूसरा ओवर लेके अच्छी शॉट और फ्लिक कर दिया है गेंद को, गेंद सीधा फील्ड की दस्तर जब तक फील्डिंग तब तक एक कोई रन भी कोई नुकसान भी नहीं। जिस बारे में गौरव जी चर्चा करे थे, जो ऑड बाउंस जब वक्त बीतेगा वो एक सिग्निफिकेंट रोल अदा करेगा, वही चीज देखने को मिल रहा है। पहला इनिंग्स में लैक ऑफ पेस, दूसरा इनिंग्स में वो अनइवन ऑड बाउंस, ये है इस पीस का खासियत। तो किस प्रकार की रहेगा स्ट्रैटेजी, मगर थोड़ा सा परिवर्तन फील्डिंग सेटअप में और शुरू से चाहेंगे जुबेन भाई जिस प्रकार की लीडरशिप निभा रही वहां पर शुरू से चाहेंगे कि एक विकेट झटका दिलाने के लिए, क्योंकि अगर 4-5 और खेल बीत गया, अगर विकेट नहीं मिला विद इन द पावर प्ले तो डिफिकल्ट हो जाएगा टाइटंस को। सो टांगी सुपर किंग को यहाँ पर कम बैक करने के लिए, और दूसरी तरफ टाइटंस क्रिकेट द मैन इन ब्लू
चाहेंगे जिस प्रकार की गेंदबाजी किए थे पहले इनिंग्स में उसी प्रकार की बल्लेबाजी भी। सटीक माहौल, अनुकूल परिवेश और ड्रीम्स में, और ड्रीम कौन देखेगा? अगर एक और बार समझौता के बाद दोबारा रेडी, ऑल सेट। अच्छी शॉट यहाँ पर फेंक कर दिया गेंद को, गेंद जा रहा है सीमा के आसपास, क्या बाउंड्री लगा करेगा पारी? नहीं, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग और रिसीविंग, 2 रन की इजाफा, एक रन, 2 रन महत्वपूर्ण रहेगा। हमने देखे थे पहले इनिंग्स में इस प्रकार के स्टार्ट मिला था, पहला 10 ओवर में, उसके बाद जो मोमेंटम में चेंज हुआ था, तो धीरज के साथ बल्लेबाजी की आवश्यकता। ये दोनों बल्लेबाज के ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है, मगर अगला गेंद राइट आर्म ओवर विकेट, जिस अपेक्षा में बल्लेबाज थे उस अपेक्षा में गेंद आया नहीं, हल्का सा आउट बाउंस, शरीर में गेंद लगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। 3 खिलाड़ी है लेग साइड में, इनफैक्ट 4 खिलाड़ी, और इस गेंद सीधा सीमा के आसपास, तो बड़ी चेस लगाना पड़ेगा फील्डर को, इसे इस बीच 1 रन की इजाफा। आप का भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे क्योंकि सर्कल में है फील्डर, उसके ऊपर से गेंद मारने के लिए प्रयास करेंगे बल्लेबाज। सोच यहाँ पर दोनों बल्लेबाज के द्वारा, संजय महांती, और कमाल की गेंद, ब्यूटी, सुपर डिलीवरी, और काटा बदलता हुआ गेंद बिल्कुल सीधा विकेट कीपर की दस्तक, जुवेन के हाथ, रन बनाने की जो संभावना उसको कम करते हुए गेंदबाज ने, क्वालिटी गेंदबाज का नमूना। ये बढ़िया शॉट है, बिल्कुल सुपर ग्लांस, और रेस्ट मार के यहाँ पर आउटफील्ड ने किया, मगर रेस में 2 रन की इजाफा। इतना भी आउटफील्ड तेज नहीं है, मगर जब जब धूप निकलेगा आने वाली वक्त में दूसरा इनिंग्स बैटिंग के लिए आसान होगा। मस्तर था सुबह जिसके चलते थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मगर इसमें दूसरा ओवर का परिसमाप्ति 2 के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिला के 7 रन बगैर कोई नुकसान। नंबर 2 गौरव भाई, very decent start this, and look at the scorecard and say all right, 7-0, but look at the kind of runs they have to score, 126 the target, so right number 1. The best thing they have done so far, men in blue, is that they have not lost a single wicket in the first 2 overs, the first 3rd over, and delightful indeed, just delightful, because it is pitched in the right areas, and the most important part about the delivery from Shakti was he was hitting the stump. He almost forced the batter to play shots like this when you keep it on that leg. They call it the corridor of uncertainty. What happens is you neither can go back and play it, or you can't go really forward and play that shot. So you've got to be very watchful playing that shot. The batsman is trying there, a little down the leg side, and the umpire doesn't waste even a second to call that a wide. Extras was a concern. It was a thing in the first innings, mind you. No extras, and this could have been a very small total. Something that the Super Kings will be thinking about a lot. Another one, this time the bowlers come back. Well, mind you that this man who is bowling right now, Mr. Shakti, who is batted beautifully. And if he can continue to do so in the second innings with the ball, good times for men in yellow. Pushed it on the back foot, finds the field out, fumbles and allows a single to be taken there. And these are the little moments that we really don't notice that much, but the strike has been passed. Imagine, as a bowler, you always want to bowl all your deliveries to one bowler, especially when you're bowling well. So not that little here and there things kind of goes unnoticed. Way outside the upstream, overcompensating on the fact that sometimes he goes straight and it becomes a wide. The score moves on to 10 with it. Well, an electrifying atmosphere. We already saw magic in the first innings in terms of what the support can bring. Looks like that's his favorite shot. He loves to play that shot. Misfield. Hence another single. We're living on singles now. Single
overs has been the diet for them. In the power plays in the first innings, 11 runs. Drifting down the leg side, no running back, very calm and quiet start once again. It's a little like the classical music in the year of Yo-Yo Singh, Bacha and Raftar. So 3 guns is scoreboard is 3 gone 11 for any loss. 3 ओवर के बाद 11 रन बगैर कोई नुकसान, बढ़िया स्टार्ट मिल चुका है। जैसे हमने बयान किए थे, क्लासिकल स्टार्ट मिल चुका है और क्लासिकल स्टार्ट को रफ्तार देने के लिए कोशिश करेंगे, उसको कन्वर्ट करना चाहेंगे डीजे में, मगर डीजे यहाँ पर गेंदबाज बन चुका है। फॉलो थ्रू में कैच लेना आपके पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलता है। विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गेम को कवर करना और विकेट लेना और असल बॉल को सम्मान बनाना एक कला होता है। चमत्कार गेंदबाजी और उतना ही चमत्कार तरीके से फील्डिंग। गेंदबाजी में गेंद भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे, खुद कैच को पकड़े। एक चीज वो वहां पर नहीं कर रहे थे, वो है बैटिंग। वो भी सही है, अगर बैटिंग करते तो विकेट कैसे लेते। लेकिन कमाल का कैच, इस मैच का सबसे अच्छा कैच है ये। फॉलो थ्रू में पकड़ना कैच को काफी मुश्किल होता है और ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी में कोई भी कमी नहीं है और वो एनर्जी हमको फील्ड पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग। अगली गेंद बैकफुट पर शॉट खेलने की कोशिश, स्पेस है गेंदबाज में। जब गेंदबाज गति से डालते हैं तब आप ज्यादा बैकफुट में नहीं जा सकते। हमने सही यहाँ पर बात बताई कि जिस प्रकार की जुबान बल्लेबाजी कर रहे थे, लैक ऑफ पेस का इस्तेमाल कर रहे थे और बैकफुट में लगातार शॉट खेल रहे थे, मगर ये जो गेंदबाजी कर रहे हैं इनके पास रफ्तार है। तो रफ्तार में आप पसंद करेंगे कि फ्रंट फुट में खेलना, मगर इसमें काफी ज्यादा बाहर था। अंपायर का मानना है कि वाइट बॉल ये ऐसा चीज है गौरव, इसके प्रति अगर आप ध्यान देंगे, अनुशासन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप रोक पाएंगे, रन के प्रति अंकुश लगा पाएंगे। बिल्कुल रुकना पड़ेगा क्योंकि जो रन गति है वो आगे जाता हुआ ओवर द टॉप, फील्डर के ऊपर से जानबूझकर खेला हुआ ये शॉट, लेकिन आउटफील्ड आज दोस्त नहीं है, फिर भी मिल जाएगा चौका, बल्लेबाज को। मुश्किल, बहुत मुश्किल वो आउटफील्ड को क्लियर करना, क्योंकि इनफील्ड के बाहर से जब भी गेंद गई है, अभी एक चीज हम बोल सकते हैं कि मुश्किल होता है बाउंड्री लगाना उस साइड में। समर्थक बैठे नजदीक, समर्थक कहीं भिड़ंत ना हो जाए, मगर भिड़ंत चल रहा इस समय ब्लू वर्सेस येलो। अच्छी गेंद और हल्के हाथ से इसको जेंटलमैन की तरह जेंटल पुश किया और कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट के रन के चलते स्कोरबोर्ड में एक कदम आगे। बढ़िया माहौल गौरव, यहाँ पर अनुकूल परिवेश, खेल जो क्रिकेटिंग एटमोस्फेयर होना चाहिए, आपने से व्याख्या किए थे इलेक्ट्रीफाइंग एटमोस्फेयर, वही चीज देखने को मिल रहा है इस समय। क्या माहौल है, क्या भिड़ंत है, क्या सपोर्ट है, क्या क्राउड है, तो यही तो है खासियत क्रिकेट की। कमाल का सपोर्ट और एक और फील्डर को अंदर लाए। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, शॉट खेलिए अगर आप खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको सही से टाइम करना पड़ेगा। वाइड इस बार कोशिश बिल्कुल थी ऑप्शन के बाहर डालने की, लेकिन एक बात हम बोलते हैं कि ऑप्शन के बाहर अगर आप डालते हैं, बहुत ही बाहर डालते हैं, तो 2 फील्डर आपका ऑप्शन के बाहर होना चाहिए, सर्कल के बाहर। एक तो थर्डमैन है आपके पास, लेकिन सिर्फ एक ही फील्डर है, अगर पॉइंट के ऊपर से जाता है तो चौका ही है। अच्छी गेंदबाजी, अपने फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी, ज्यादा ऑप्शन के बाहर नहीं जा सकते और वैभव ने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। स्टंप में गेंदबाजी कर रहे हैं, आपका डीप में स्क्वायर लेग में फील्डर है, थोड़ा सा भी अगर आप शॉट डाल दें तो मुश्किल है, लेकिन उनको पता है उनके लेंथ क्या होने वाला है। अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 1-2 वाइड को छोड़कर।
और एक टीम में देखिए परिवर्तन हो रहा है। और फील्डर जो डीप मिडिल में तैनात ओवर में 30 सर्कल आ चुके हैं सिंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए। मगर इस बार बैकफुल में जाकर कट किया है, गेंद जा रहा है सीधा डीप पॉइंट के दस्तानों में, सिंगल मिलेगा। बढ़िया शॉट सिलेक्शन गौरव जी। ऐसे कहते हैं अपने फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करना। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के बाद 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बात यह है कि रन गति सही है, ठीक ठाक है, हम बोल सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि 9 विकेट अभी हाथ में है, तो ये मैच टाइटंस की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ। अगर सुपर किंग्स को इस मैच को जीतना है तो यहाँ पर पावर प्ले के अंदर ही, पावर प्ले हालांकि खत्म हो चुका है, 4 ओवर का है, लेकिन 6 ओवर 7 ओवर के अंदर 2-3 विकेट निकालना तो पड़ेगा। 2 विकेट अगर निकल गए, एक तो निकल चुका है, 2 या फिर 3 विकेट हो गए तो वापस आ सकते हैं इस मैच को। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और ऐसा कौन गेंदबाज रहेगा जो विकेट टेकिंग गेंदबाज माना जाएगा? सवाल तो आने चाहिए गौरव जी, मगर जवाब सिर्फ गेंदबाज के पास है। धीरज के साथ बल्लेबाजी, बैट्समैन कहां जा रहे हैं? रंजित संजय है स्ट्राइक पर। पहली गेंद इस ओवर की, फिर से आराम से खेल दिया, इसको खेल दिया है। गति था नहीं, अगर गति होता तो बाउंड्री के बाहर चली जाती वो गेंद। हल्के हाथों से खेला हुआ है शॉट, 1 रन। मगर शान को देखिए, भूगोल को देखिए, ग्लूकोन लेकर जा रहे एनर्जाइज करने के लिए। ये है मंत्रणा है, और टैंगी सुपर किंग को एनर्जाइज करने के लिए वक्त आ चुका है। विकेट लेने के लिए मंत्रणा दे रहे। वेल डन शान एंड गुगलू। हाँ, कलाइयों का इस्तेमाल किया, 1 रन। तो अभी जैसे आप नॉर्मली करते हैं, फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं, डाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्पिन डाइट पे है, स्लो डाइट पे है, और दूसरी तरफ सिंगल्स चल रहा है आराम से, जैसे कार्तिक का महीना चलता है वैसे चल रहा है। आपको पता है 30 दिन के बाद क्या होता है? अच्छी व्याख्या आपने की, अच्छी एक्सप्लेन की। और इस वजह से लेग साइड में ड्रीट हुआ था, हल्का हाथ से इसको मोड़ दिए थे। मगर फील्डिंग सेटअप के ऊपर एक बार गहराई से नजर डालिए। अच्छी फील्डिंग सेटअप, कप्तान मानना पड़ेगा इस समय। जुबिन जिस प्रकार की लीडरशिप क्वालिटी निभा रहे हैं, अच्छी शॉट। मगर यहाँ पर बैकफुट में जाकर उसको कट किया है लंबी चेस यहाँ पर फील्डर के पास, मगर एक ही रन लेने के लिए रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। और इसी के साथ 1 रन की इजाफा स्कोर बोर्ड में। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 23 रन इस सिंगल के साथ। मिस करके विकेट कीपर रन के लिए जाएंगे। 1 और रन लगा था, बल्ले के साथ कनेक्शन हुआ था, मगर मौका था गौरव जी, अगर यहाँ पर हम नजर डालेंगे तो कि मौका बन सकता था। मगर जुबिन की कैजुअल यहाँ पर एफर्ट में कहूंगा, आसान नहीं होता है जो धूप में फील्डिंग करते बतौर विकेट कीपर ड्राइव लगाना। और जो वे आउट से ऑप्शन था कम से कम 6-7 फीट, वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर जुबिन। मगर ये सही सोच, कंट्रोल में शॉट था, नियंत्रित शॉट, सिंगल के साथ रखेंगे स्ट्राइक। 5 ओवर की परिसमाप्ति समय, 5 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड में 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 for 1 after 5, they're going at 5 per over, little above the return that you get from your saving scheme account. All right, it's a very steady start, calm and quiet start, almost like giving an assurity to the rest of the batters. As long as we're here, we don't need to be worried about the run chase.
But the Super Kings desperately want another wicket, not just one, two of them. And nobody understands this more than Super Kings. It's hot and humid conditions out there, very top 2P fielders, even top 2P batters out there. But most of the time, we'll come back to that. First ball of fresh over. Little glance, almost like he was waiting for delivery like this and read it from yesterday. But this is what he's going to bowl. This is helps it for a single. And for some reason, the batters actually enjoy when there is hot and humid conditions. You ask any batter in the world, he will say, I will bat better when there is hot and humid conditions. The moment it becomes overcast, windy, it actually goes in the favor of the bowling side. Because the bowlers use the conditions well to their advantage and get the better of the batsman. Nothing, absolute nothing from that. If you want to know how to stop your unflow, look at these bowlers now. They've done everything possible in the first innings to get to the total of 125 and now reciprocating well with the ball. This is a champion stop. All they need now is a wicket, and that's it. Almost on the verge of getting it. Oh, hello. When was the last time you saw that? The bowlers holding the ball in the phase of play and giving it back to Recently, there's an incident. Mustaqir Rahim just picked the ball in his hand and out given by the umpire. Exactly. First match. We've got a very kind umpire there. He has gone for the big one. The fielders not going to be convergent to take it. Just a single this time. This is a very catch, and every time a catch like this comes, it just takes you back to 1983 Kapil Dev catch to get rid of Vivian Richards. Well, what a fantastic start till now. But what a fantastic over so far. If you look at this particular over, goalless for delivery, trying to play the short using the wrist, the soft bottom hand, and a single has been taken. And a single is adding to tally, end of the over number 6, 6 gone, and it's 20. 26 loss of 1. 28. 6 ओवर के बाद 28 पे 6 ओवर के बाद 28 रन 1 विकेट। तमाम जितने भी सारे बुद्धिजीवी और खेल प्रेमी यहाँ पर बैठे हैं, हम उनको स्वागत करना चाहेंगे इस ड्रीम्स क्रिकेट लीग, एक फ्रेंडशिप मुकाबला जो कि ड्रीम्स ड्रैगन्स और कैंडी सुपर्स टीम के बीच में एक कड़ा टक्कर का मुकाबला, क्रिकेट की माहौल बना है, क्रिकेट की जो परिवेश से यहाँ पर अनुभव हो रहा है और यहाँ पर बैठ के हम मजे ले रहे हैं, तो अच्छी संकेत है कि सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मगर जब जब खेल आगे चलता रहेगा, हम रिजल्ट की जो नजदीक है, रिजल्ट की जो प्रेडिक्शन है, हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। और फिलहाल जो स्टार्ट मिल चुका है इतना बुरा भी नहीं मेरे विचार में, जिस प्रकार की गौरव जी बोल रहे थे कि विकेट की सख्त आवश्यकता, क्योंकि 7-8 ओवर के बीच में अगर 1-2 विकेट और आ गया तो यहाँ पर सुपर किंग बैक कर सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात है जो कैडेंस के लिए अभी भी दोनों खिलाड़ी मौजूद, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके ऊपर निर्भर करें, डिपेंडेबल प्लेयर। वंस अगेन सिबोन का ये अच्छी गेंद, जब अच्छी गेंद होते हैं तो क्राउड्स के अंदर सपोर्ट देखने को मिलता है, मोटिवेट कर रहे हैं और एनकरेजमेंट दे रहे हैं अपनी एनर्जी के साथ कि हम आपके साथ हैं। मगर बल्लेबाज ने बोला कि हम आपके हैं कौन, और खतरा बन सकता था, मगर बार बार बच्चे यहाँ पर अच्छी रनिंग विकेट डायरेक्ट अगर होता तो बात कुछ अलग होता। अभी भी तैनात फील्डर थोड़ा सा बाहर है, 30 सर्कल के अंदर तो नहीं है मगर थोड़ा सा बाहर खड़े हैं। करने की कोशिश काफी ज्यादा बाहर ड्रिफ्ट हुआ था, अंपायर का मानना है कि वाइड के माध्यम से स्कोर बोर्ड में इस समय 30 रन, 30 लॉस ऑफ 1।
साफ बड़े हैं बिल्कुल बैट में जाकर इस गेंद को पंच करने की कोशिश में क्या मिलता है हमारा गेंद आपका कमाल की विकेट खुशी की तरह बढ़िया इम्प्रोवाइजिंग बॉलिंग में यहाँ पर कहूँगा सटीक लेकिन का जो कैलकुलेटिव चीज को लेकर जा रहे थे गेंदबाज जिसके चलते यहाँ पर विकेट मिला मगर यहाँ पर ट्विस्ट बन सकता है मैच में क्योंकि टांगी सुपर किंग्स के अंदर क्वालिटी गेंदबाज अभी भी मौजूद तीस रन पे 2 विकेट सात ओवर चल रहा इस समय अजीत रहेंगे न्यू बल्लेबाज चिताचरित ढंग से बल्लेबाजी की आवश्यकता तपना पड़ेगा तड़पना पड़ेगा और इस माहौल और कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा वो कहते हैं कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत बढ़ता है सोने को जितना आग लगे उतना ही प्रखर निकलता है झेलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है अजीत का एक अजय पारी की आवश्यकता एक और बार कट करने की कोशिश बैकफुट में जाकर बल्ले के साथ गेंद का कोई भी संपर्क नहीं कोई रन नहीं कोई नुकसान भी नहीं दल का स्कोर अभी 30 रन पे सीमित 30 रन पे 2 विकेट ड्रीम्स एक ऐसा जगह है जहां पर आप ड्रीम देख सकते हो पूरा भी कर सकते हो कोई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के अंदर जो दूरी है उसको कम करता है ड्रीम्स यूनिवर्सिटी आपके सपने को साकार करता है मगर यहाँ पर किसका सपना साकार होगा कौन सा टीम का अपनी ऑब्जेक्टिव के पास अपनी गोल के पास रीच करने के लिए आपको जो चीज की आवश्यकता है उसको अपनाना पड़ेगा मगर अगला गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट खराब गेंद बिल्कुल बाहर गेंद था अंपायर का मानना है कि व्हाइट बॉल 31 रन यहाँ पर 2 विकेट की नुकसान धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता गौरव जी रन बनता हुआ मगर विकेट आ चुका है जो कि अच्छा संकेत सुपर किंग के लिए ऑन करना एक वक्त में इनकी फैंस को मालूम नहीं था कि विकेट गया है जब देखा कि विकेट जाकर स्टोन को लगाया तो और एकदम से उठने लगे और चिल्लाने लगे टांगी सुपर किंग क्या कमाल की मार जितना कष्ट खिलाड़ी नहीं कर रहे उतना ही कहीं ना कहीं मेहनत सपोर्टर कर रहे हैं चिल्लाते चिल्लाते कम से कम 2 किलो ग्लूकोन डी भी पी जा रहे हैं और कमाल के एटमोस्फेयर यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिंक्स के बाद हम फिर से मिलेंगे आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ क्रिकेट पवित्र डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन
अच्छी सोच यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी भी देखने को मिल रहा है, पर किस प्रकार की यहाँ पर बल्लेबाजी वो तो वक्त बताएगा। अगला गेंद तैयार होती है राइट हैंड ओवर द विकेट और ड्राइव किया है यहाँ पर गैप में ढकेलने के लिए नाकामयाब, मगर सिंगल आप रोक नहीं सकते बल्लेबाज को। और इस गेंद को कट किया है, गेंद से स्पिनर के आसपास, जब तक फील्डिंग तब तक एक और रन की इजाफा, तो सिंगल इज कमिंग वेरी इजीली, मगर दिस इज अ गेम व्हिच इज लाइज बिटवीन सिंगल, डबल एंड मच नीडेड बाउंड्री by which you can create a victory over here. This time playing with his bottom hand into the stroke position for another single. Scoreboard moves to 35. Chisora खराब फील्डिंग वहां पर, सिंगल हुआ, 36 रन यहाँ पर बन चुके हैं गौरव जी। 36 runs, 3 wickets, and more of floating run chase now, with players trying best to be settled out there. Wanted to hit it out of the park. Didn't quite manage to get it. Appeal from the bowler umpires, very much unmoved there. But not two delightful umpires. They was very accurate with their decisions. Now you mentioned about the hot and humid conditions, how tough it is for the umpires. We never say that. So we like to say thank you to our umpires for being patient but still coming out with right decisions. निश्चित तौर पे अंपायर की हम यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं, जिससे हॉट ह्यूमिडिटी कंडीशन के बारे में गौरव जी बता रहे थे, और उस परिवेश के साथ आप अंपायरिंग करना और अपने डिसीजन को सही रखना कितना मुश्किल काम होता है। आप एक जीता जाता उदाहरण दे रहे दोनों अंपायर, बहुत ही बढ़िया काम, अपनी काम को बखूबी निभाते हुए। Absolutely. Now he's right for a big one outside the off stump. Yes, he just closed the face of the bat at the last point, thanks to the slowness of the delivery. Good fielding at the deep, I have to say. They've taken 2 runs from it. And this is some serious performances with the ball and on the field as well from the Super Kings. They've got everything possible to make sure get a decent total and give something to their bowlers. And now look what they're doing, making it tough for the Titans. हमको जिसकी गौरव जी बता रहे थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में जितना शोर नहीं आएगा उतना शोर यहाँ पर आ रहा है। कमाल, what a wonderful atmosphere. Indeed, the fans are doing their job superb. हालांकि यहाँ पर जैसे मैं बता रहा था कि कम से कम 150 के आसपास लोग होंगे ज्यादातर, लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि 15,000 लोग हैं।
थैंक यू सर जी, आपने हमारे ख्याल रख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी। और चलिए और खेल की ओर जितने दल हो सके मैच को आगे लेकर जाइए। दोनों अंपायर बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं मैदान के अंदर, हॉट और ह्यूमिडिटी कंडीशन। मगर देखिए ये पीले कलर की जर्सी इस समय भारी पड़ रहा है ब्लू के ऊपर। 36 रन में 3, माफ कीजिए 38 रन में 4 विकेट। जी सर, 38 रन, माफ कीजिए भाई साहब, जैसे कर रहे हैं भाई माफ देंगे। 3 कैसे बोल दिया आपने, 4 तो होना चाहिए। मगर बल्लेबाज इस प्रकार की ये शॉट खेल रहे हैं, इनको बना दो स्वच्छ भारत के ब्रांडनामा से झाड़ू प्रहार कर रहे हैं। बढ़िया माहौल, मगर एक और बार, अरे भाई साहब पूरा जमीन साफ है, पीच साफ है, अगर वहां पर झाड़ू लगाएंगे तो बात नहीं बनेगा। सेवन क्या कमाल की, और देखिए ऑलमोस्ट ऑन प्लेट डिलीवरी, खतरनाक गेंदबाजी, जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताना में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, लगातार 3 के डॉट। फिर से स्वीप लगाने की कोशिश, फिर से नामियाब। 39 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और सुब्रत जी इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। मगर सुब्रत जी के वाइड के आने के बाद सुब्रत जी के अंदर जो जोश है, जो जज्बात है और उनका जो एनर्जी है, ये पूछिए मत कितना रफ्तार में बढ़ चुका है। पूरा जंग जीत कर आए हैं शिवम जी ने, इतना प्राउड मोमेंट। ये पहली बार गेंद हो रहा और ये सीधा के बाहर, कहां तक जाएगा गेंद, ये छोड़ा, वाह पहला छक्का, ताजा नहीं लग रहा है। और टैंगी सुपर किंग ने कि हमने मायूस की माहौल, 6 रन, बढ़िया बल्लेबाजी, पहला छक्का टूर्नामेंट का, पहला छक्का इस मैच का। और गेंद देखिए गुमशुदा की तलाश में, गेंद खो चुका है। ये चंद्रयान 4 में ये मंगल ग्रह पर जा चुका है गेंद, गुमशुदा की तलाश, रिपोर्ट लेकर आइए। बल्लेबाज कौन है? फिरोज, अच्छी बल्लेबाजी, मगर शुभ्रत कटकनी कोशिश, बल्ले के साथ गेंद का कोई भी संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं। दल का स्कोर अभी 44। इतने जोर चिल्ला रहे हैं, इनको वीक्स अंडर 5 वीक्स एक्शन 5 होने में काम नहीं करेगा। मगर सिल्लू जी वाह,
मिलना है। ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, टांगी सुपर किंग के लिए पूजा पाठ बहुत मात्रा में हो रहा है। मगर इस बीच अच्छी रनिंग की विकेट मिल चुका है और टांगी सुपर किंग एकदम टॉप गियर में। फैंस की सपोर्ट, अपनी क्वालिटी गेंदबाजी, फील्डिंग सेटअप में बेहतरीन फील्डिंग का नमूना के बाद काफी हद तक खेल में दबाव और वाइड बॉल। Needed from, in fact, 46 runs, 5 wickets. They're really on the right track, the bowling side. 5 more wickets. That's the way they'll be looking at it. End of this over. 10 overs completed. It's 46 for 5. And looks like Titans have a mountain to climb now. बहुत बड़े स्कोर की उम्मीद है और 5 विकेट वो भी टेल एंडर्स जब आएंगे तो बल्लेबाजी मुश्किल होने वाला है और गेंद पर गेंद आपके साथ प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और तब मुश्किल होता है। इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश ओवर, टाइम फॉर अ स्विच हिट। वेल finds the fielder. Look at the excitement. Look at the excitement from the dog out there. Now they thought they have got a wicket, but that is not to be. Wide this time. The score moves on to 47. You have to have some big overs. They just can't bat through like this. But where are the runs? The survival is difficult. And that too on a wicket like this tells you everything about the kind of performances we've got with the ball. Oh yes! Wicket number 6. Ladies and gentlemen, wherever you are, the inch of the green is delighted with his amazing performances with the ball from Super Kings. Wicket number 6. That's what they'll be thinking, yeah. 4 wicket की तो बात है. And Super Kings, the way they're cheering, every cheer almost brings up a wicket. 47 for 6. 47 for 6. The Titans have a mountain to climb. महेंद्र की प्रभुत्व वही याद है ब्रेस्ट टाइम में तो आपको पर्वत चढ़ना ही पड़ेगा. तो थोड़ा सा बात अंपायर ने कहा कि ये एक वाइड बॉल है, एक एक्स्ट्रा रन यहाँ पर रन है ना अकाउंट में जुड़ता हुआ. ये माहौल कुछ बड़ी अलग है तरफ जी. एक और सिंगल, धूप बता हुआ लेकिन उसी के साथ एक्साइटमेंट भी बता हुआ. 4 ओवर 4 विकेट बाकी है. इस बार हुआ कनेक्शन या बाउंड्री के बाहर चली जाएगी गेंद, बिल्कुल भी नहीं है. एक और सिंगल वहां पर.
लेकिन एक बात हम मान सकते हैं बिल्कुल दोनों बल्लेबाज को देखिए कि कोशिश जारी है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसे आप कहते हैं आपके लाइन है, हम बोल दें जी 50 रन पूरा होता हुआ, मगर इस बार इस गेंद को निकालने की कोशिश है। जब लगवाई नहीं है और आपको रन नहीं मिलेगा तो कहते हैं कि जमीन पे बैठ के आसमान तो क्यों देखता है, कि जमीन पे बैठ के आसमान तो क्यों देखता है, अपनी पंखों को खोल जमाना अपना उड़ान देखता है। या मंजिल मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, कि मंजिल मिले या ना मिले तो किस्मत की बात है, मगर हम कोशिश ना करें तो गलत बात है। कोशिश जारी है। मगर आपने एक चीज लाइन में उसने आरंभ की थी गौरव जी, आप जब उसी में कमेंट कर रहे थे कि पवित्र जब आप हार्डवर्क करते हैं, अगर सही डायरेक्शन में करते हैं और लक साथ देता है तो बात कुछ अलग होता है। तो हार्डवर्क प्लस लक इज इक्वल टू सक्सेस। गौरव जी शक्ति आज के मैच के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। अभी गेंदबाजी देखिए शक्ति के मामा जी, शक्ति जी की माँ हमारे पास मौजूद, और जिनके पास माँ की शक्ति होता है, नाम देखिए शक्ति, और इस शक्ति का दिन में और शक्ति स्वरूपिणी माँ खुद हमारे पास विराजमान। तो शक्ति के बल्लेबाज देखिए, आज गेंदबाजी आ रहे उनका जलवा, क्या बात, मैन ऑफ कंप्लीटली पैकेज। अपील और जुबिन को लगता है कि हर गेंद पर विकेट मिलने वाला है, बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही एक्साइटिंग विकेट कीपर। एक और मौका जी नहीं, ये सूझबूझ के साथ खेला हुआ ये शॉट, एक रन दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं, मिक्स ऑफ हुआ है, रन आउट का मौका भी है, चाहिए रन आउट, और क्या आ गया अंपायर, देखना पड़ेगा वहां पर, मुझे लग रहा है अंपायर ने मना कर दिया। नहीं बिल्कुल अनमोड है अंपायर जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सिलेबस के बाहर के सवाल को छोड़ देते, अंपायर ने इस डिसीजन को छोड़ दिया। कोई दबाव नहीं, अंपायर ने बोला कि इलीगल क्वेश्चन था ये, और इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। कमाल की यहां पर माहौल और जो जज्बा जुनून, मगर इस गेंद को हल्के हाथ से पुश किया है, बैकफुट में सिंगल मिलेगा। लवली एटमॉस्फेयर वंस अगेन। फील्डर ने ऐसा फील्डिंग करने से मछली पकड़ रहे, मगर जैसे तैसे फील्डिंग करते हैं, जब किया सिंगल यहाँ पर रन बनाकर में स्कोर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्कोरबोर्ड में 54 रन चाहिए। 49 गेंदों में 72 रन की आवश्यकता, 49 गेंदों में आखिरी गेंद इस ओवर का। गेंद को ठीक है, गेंद टप्पा खाया, कोई एक रन मिलेगा, आप कीजिए। अब 71 रन, 71 from 38, end of over number 12. More than the number of runs, now it looks like number of wickets that is much more important now. With 4 wickets to take for the men in yellow, they'll be just clearly thinking about those wickets, and that is why you could just kind of sense that there is a sense of urgency from all the players out there. Look at, there's a lot of flips around the field positions. Every inch of this field has to be accurate, and you can sense that they want to win this match at any point, at any contest, at any point in time. They want to be at the best of their things, and that is exactly the reason why we've got a tournament like this where nobody really gives an inch to the other once you go over the line, cross over the line. Absolutely. Next ball.
Right, and where do you get your runs from that? Straight away, question mark. The bowlers are almost like setting up a pathway and saying that we are on a mission to make it as difficult as possible for the rest of the batters out there. Good. Slightly outside of stump. Talking about the sense, what the bowlers shows his sensibility over here. Sensible bowling. What a classical delivery it was. True double in a row. Pressure on the batter. Now required on it just above 6 goal off. Just above 6. A little above, a little below. The return that you get in fixed deposits. Alright, a dot ball. I would like to say thank you to, of course, the chairman, sir, Dr. Pramod Chandravata, for cheering for all of us out there. Thank you, sir. And alongside, of course, our directors, Mr. Pradip Chandravata and Mr. Balram as well. This has been an exciting atmosphere, thrilling atmosphere, and it is so sort of a wonderful to see a light panel of guests alongside us, just cheering and making it a success in every inch of it. कमाल की माहौल तमाम अतिथि गेस्ट चेयरमैन सर को बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन करते और खेल के प्रति जो श्रद्धा है वो बयान करते हुए अपनी इस स्टेडियम के माध्यम से, इस खेल के माध्यम से सिंगल स्विच एक सिंगल यहाँ पर काम नहीं करेगा। वक्त आ चुका है और गियर में परिवर्तन, वक्त आ चुका है मोमेंटम में परिवर्तन करने की। बढ़िया माहौल खचाखच भरता हुआ ये खूबसूरत सदाबहार ऐतिहासिक ड्रीम्स का ग्राउंड। अच्छी गेंदबाजी पड़ती हुई गेंद हल्का सा बाहर और विकेट कीपर, बढ़िया विकेट कीपर नमूना जुबेल स्टार के द्वारा ओवर को किया है परिसमाप्ति। 13 ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड में 57 रन पे 6 विकेट। अब चाहिए आपको 42 गेंदों में 69 रन, 69 in just 42. And that's a lot of runs. Looks like easy runs, but I'm telling you, go and bat there, it just becomes tough and tough. They want some assistance there, the fielders. Time for some unofficial drinks.
It just becomes tough for men in blue. I know this is 13th of October and not 19th of November, but still it is tough for the Blues. Who would forget that night, 19th of November 2023, was when India came second in that World Cup final. Glad that we did come back so well to hold the trophy in T20 World Cup in 2024. Quite an achievement for Rohit Sharma and company coming back into this match. The men in yellow are really turning it on, both with the bat and now with the ball. On the verge of going back to the pavilion there, almost was on doing of those resistance that you've seen from the batsmen there, but that is not to be. So far so good in terms of what the bowlers have tried. They have kept it wicket to wicket. Back with the pace, has not given an inch to the opposition, and that is exactly what you expect from bowlers in this form of the game. It just continues for them. Where are the runs? The biggest of the questions and the toughest of the answers. It is an amazing cricket ground where we've seen some great cricket matches been played. I was a part of Odisha Cricket League, the official matches live telecasted on fan court. It was played in this ground, and this ground always brings out some exciting game of cricket, and it just continues here as well. Overthrows, but no real run. लास्ट तक ये करिए मैं और फ्लोर से जहाँ चाहूँ पूरा देसी चाहूँ सेकंड जाके नहीं पहले मतलब क्या हो Given the conditions, given the required run rate, and more importantly, given the context of the match, in India, every time a kid wants to play this game of cricket, he prefers to hold the bat and not the ball. You ask any one of them, they will say, I want to be a batsman. Very rarely you see a kid just coming in and say, I want to be a bowler. It is a wide. But at this point in time, I think it is actually good to be a bowler now. And very tough if you're a batsman and not finding your boundaries when it matters the most for the batting side. The Titans have done quite well in the first half of the first innings. In the first initial overs, Titans were brilliant with the ball. Picked up those wickets, did really well. But after that, the way Super Kings came back was a thing to see. Has been dropped by the fielder. Could have been wicket number 7. That is not to be. And you look at the supporters, they're not happy with it. Are they? Not at all, Gaurav. एक मौका था कि जीवन दान बिल्कुल आप कह सकते हो, मगर हाथ में नहीं आया, फिसल गया क्या आज? पर कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ गेम, आगे बढ़ेंगे. देर आया, दुरुस्त है, मगर चौका आया, सही चीज. कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी. Juvin's not happy at all. He wants it to be absolutely perfect. Almost like cooking a biryani. Every step is important. Can't miss one. Inside is लगा और सीधा शॉट फाइनली की दस्तान हुए सिंगल. ऑलमोस्ट रिवॉल्व 11 इस समय जो आवश्यक रन रेट है 11 से ऊपर जाता हुआ. डिफिकल्ट टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल.
16 from 30 deliveries. There we go. It looks simple, not easy though. From 30 deliveries with 4 wickets in hand. They really need to go bang bang here. That's one way of doing it. Get your runs if you can, and get your runs if you can when you know the bowling has really been good. And Shakti, the toughest of them, is back. Defensive shot. Defensive shot will almost like asking for a blanket in 45-degree hot climate. It's presented a very classical shot, but not the need of the hour. The need of the hour is more of the shot that he played now. Chase for the fielder. Did a football skill there to stop it, but not before they have taken 2 runs. And only 2 runs. It's all 68 for 6 now. 68 for 6. It's getting tough. Getting very, very tough for men in blue. And rightly so. Shakti continues. If it is not happening with the straight bat, it's not going to happen with the cross bat. तो सीधे बल्ले से नहीं आ रहा तो टेढ़ा करने की आवश्यकता, मगर टेढ़े से रन डाउन नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? मगर ये टेढ़े यहाँ पर खेलने के लिए प्रयास हो रहा, फील हो रहा है, अंपायर ने मना किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी स्थिति नाजुक है गौरव जी, नाजुक परिस्थिति। इस परिस्थिति से कैसे झेलते मैन इन ब्लू? एक और बार कट करने की कोशिश, राइजिंग डिलीवरी सीधा विकेट की बगैर स्थानों में। Well, the message from Shakti is very clear that he wants to hold the line like no one has ever done, and almost like forcing the batter to do something extra. Like that, another good delivery. Where are the sixes? Where are the fours from it? Very difficult to hit a boundary from that length. This is champion stop. Exciting phase of play, and more so from Shakti as this over comes to an end. It's 69 for 6. And they desperately need those boundaries, just like the students need the Wi-Fi. You want to be a batsman at this stage? Yeah, it is a risk factor. But if you take the risks, if you achieve it, then I will be highlight. Yeah, it's like, it's more challenging, and everyone who, sort of men in particular, I'm not offending the women out here, but men in particular loves the challenge. When they're challenged, it just tests you, you love it. So very sort of a less number of men really stay in their comfort zone. Most of them love to go outside their comfort zone and do things. Absolutely. इसलिए तो कहते हैं कि खोकर पाने की मजा ही कुछ अलग है। It's almost like I'm coming from Cuttack to Dreams. I know the path. I know that this is where I land if I go in this particular direction. What I'll do is I'll go in the other way and see, okay, is it possible to go? I'll find road 1, road 2, road 3, road 4, knowing that road 1 still is the best. Absolutely. That's the thing about men. इसलिए तो कहते हैं कि खोकर पाने की मजा ही कुछ अलग है, और रोकर मुस्कुराने की मजा ही कुछ अलग है। अरे हार तो जिंदगी की हिस्सा है जनाब, मगर हारने के बाद जीतने की मजा ही कुछ अलग है। वही चीज, वही जज्बात और हुनर को आगे लेना पड़ेगा। कमाल की माहौल इस समय, जब आप खोएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे गौरव जी? सैक्रिफाइस करने के लिए तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। Coming back to cricket, 69 for 6. And what happens is sometimes in Hindi they say, "Happy chala gaya, pooch baki hai," but now it becomes very difficult because 4 wickets and then hanging like no one has ever done. बढ़िया माहौल है इस समय। स्लाइटली चेंजिंग इन द फील्डिंग सेटअप, मेक समथिंग डिफरेंट ओवर हियर, कुछ अलग करने की प्रयास।
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, कितने ज़्यादा हो सके विकेट लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर way outside the leg stump. Umpire calls wide delivery, and with this wide delivery, score moves one step ahead. $71 for 6. 71 for 6, and ladies and gentlemen, the atmosphere has been electrifying. It has done now sort of a cool down a little bit thanks to the kind of cricket we've got in this few overs. Not enough big shots, no wickets. They're just hanging there, just delaying the loss. There's one way of doing it, to delay the victory of the others. From ball number 1 to the latest of them, the batsman on strike, Mr. Ashutosh, just keeps on playing that sweep shot. It doesn't matter if it comes out or not. So what is the probability of him connecting the full shot? Coming from mathematics, I have to say that is less than 0.6, 0.7, something like that. Talking about the mathematics, you are PhD from NIT, so you will explain better than me. I'm not sure if that really works in cricket. Cricket is a game of mathematics, they say, but I always feel that there's one thing that sets cricket apart from mathematics, and that is that cricket has a lot of emotions in it. Emotions are the key, mind you. Emotion, hey, cricket is all about the emotion. It's not a game. It's spreading the unconditional love between the people. इसलिए तो हमारे चेयरमैन सर यहाँ आकर बैठे हैं। देखिए, खेल की वजह से श्रद्धा है और समर्पण भावना को यहाँ पर परिप्रकाश करते हुए सर के लिए एक बार जोरदार ताली बनना चाहिए, जोरदार ताली। Yes, big round of applause. A big heart. And also to our directors as well. बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रगुजार, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। और इसी बीच गेंद को निकाल दिया है सीधा सीमा के आसपास, मगर नहीं, तैनात फील्डर जहां जाता है गेंद उसके पीछे दो तीन मैच होते हैं। ऐसे लग रहा है आज है टांगी सुपर किंग 11 खिलाड़ी नहीं, 111 खिलाड़ी तैनात है, 111 मैदान के अंदर। I was mentioning about that in the first innings that 11 of them play, but that's the 12th man concept. The rest of the support staff just bringing in that particular thing, and that is the most important part of cricket. So I feel there's only 10% of them are playing, 90% of them are sitting here supporting and doing the most major thing out there. They never take a wicket, never score a run, but they have done the most important thing out there, because cricket is a game of minds. I'll tell you a small story about it, very important story, as this game just continues. It's a matter of 4 wickets, 75 for 6. As commentators, they say that you should never be biased. You should never support one team. You should always be neutral. Well, of course, we'll come back to that. Crowds are roaring. They want a wicket. They want a wicket. And almost on the ball, getting round. Good hook. The charge at the ground is British wicket. This is the most popular wicket of the match. 75 for 7. Running in the second way, that India will not have a World Cup. MVP. There's no MVP here tonight. MVP, the most valuable player. And this is the man, Mr. Shakti, with the bat, with the ball on the field. Go and get that, he says. जब टीम में शक्ति है तो आएगा प्रगति, क्योंकि टांगी सुपर किंग के पास कमाल की एटमॉस्फेयर देखिए, क्राउड देखिए, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए।
पूजा पाठ करके आए जो मैडम जी बोल रहे थे कि आज सुबह सुबह हम मंदिर गए थे और टांगी सुपर किंग के लिए दुआ मांगे थे, मगर इसमें That's a wild ride from the batsman. Where did that come from? Where did that come from? बैट्समैन नेम, यस आचार्य. बैटर नेम प्लीज, बैटर नेम Gaurav. In the batting, Gaurav, in the commentary, Gaurav. What a coordination. Wow. Give your runs, Gaurav. मगर गौरव हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए प्रयास था. अरे हेलीकॉप्टर की बात कौन है? महेंद्र सिंह धोनी. But here is the question. Gaurav, the way he's batting, why is he batting at number 9? He should have come higher up the order, mind you. He's batting at number 9 and he's connected. The first ball is faced. और का परिसमाप्ति, ऑलमोस्ट ओवर का परिसमाप्ति इस समय चाहिए 12 गेंदों में 47 रन, 47 प्लस 12. और ये धोनी है, धोनी ही अगर यहाँ पर होते हैं तो फिनिशिंग चाहते लगते. Knowing Super Kings, knowing how they think, they are only thinking about 3 wickets. That's it. हर गेंद में चाहिए चौका. वो कहते हैं कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी. तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी. अरे हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, उस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है. In the ninth of Dasara, as you write the script of this match, you write it with your graceful words. And those glorious chapters will tell you how the bowlers are performed. दशहरा के दिन, ये पवित्र का दिन है. देखिए कौन कौन नाम, देखिए शक्ति, दुर्गा, तो वो जो डिवाइन एनर्जी है नाम के माध्यम से इनका विजय होता हुआ, नकारात्मक शक्ति का पराजय होता हुआ. शिव प्रसाद भी टीम में मौजूद. तो इस प्रकार की जो भगवान का नाम है, आज दशहरा के दिन सारे नकारात्मक शक्ति का विध्वंस होता हुआ. What does the umpire say on that one? Oh, in fact, it's clean up there. Cramp, hello, Astrid, medical team physio, please go as quick as possible. We hope the recovery as quick as possible. विकेट मिलता हुआ, विकेट ना अंपायर जी, विकेट नहीं ना, विकेट विकेट जी हाँ, आउट. विकेट मिलता हुआ, Alright, 1 needed. एक विकेट चाहिए बस. 1 wicket needed to hold the trophy. He is on a hat-trick. He is on a hat-trick. Is it happening in this delivery? Is it happening in this delivery? As Owen will be facing the hat-trick ball. And Super King have left no stone in making sure that this becoming their match. On a hat-trick, sir. It will be fast hat-trick in this particular match. Can he get one? Durga, the man who has every chance of picking up a hat-trick here. Absolutely. We are waiting to see some unforgettable and historical moment to reminiscing forever in the history of Dreams Cricket League. What a moment! एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली. There we go. There we go. It's time for the hat-trick ball. Can we get one? That will be a movie. Imagine this big a movie and you make Durga the hero
of the movie. All right, Shakti will disagree. Shakti will say, I'm the hero out there. Well, fantastic, absolutely fantastic moment. So एक बार ताली होने से हैट्रिक, हैट्रिक, जोरदार ताली. Here's the hat-trick ball. He's gonna go with it. मगर हैट्रिक ये जा सकता था रनआउट के माध्यम से, वो हैट्रिक हो सकता था अगर कलेक्शन सही तरीके से करते तो. आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हाथ से निकल रहा है. Well, have you played Ludo? Yeah. What happens in the last six? To get that last six in Ludo, it doesn't come out at all. That's the problem. Fantastic. It doesn't come out for the winning side then. You might get 3, 4 number of six that you want in Ludo, but at the time you need it the most, it doesn't come out. There's the victory! There's the one! What an exciting atmosphere! They are delighted and running and celebrated like there is no tomorrow. The Super Kings have become the champion there. What a tournament! What a team to hold the trophy! क्या बात है? तो देखिए तू खुद की खोज में निकल तो किसी ने हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय कभी तलाश है. अरे चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है दशा करी, इन पापियों की हक नहीं कि ले परीक्षा करी. तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय कभी तलाश है. अरे चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कम कंपाएगा, अगर तेरी चुनरी गिरी एक भूकंप सा आएगा. तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय कभी तलाश है. अरे समय आ चुका है, हाँ हमको मिल चुका है ड्रीम्स क्रिकेट लीग का वो फाइनलिस्ट, वो है Tandy Super King. What an incredible match! And have a look at that for a celebration. They are as delighted as they should ever be, and rightly so, thanks to the amazing performances they are putting with the ball and with the ball. The excitement will continue, the celebration will continue. The Super Kings are the champions of the Women's Premier League. What a moment! What a Gaurav, I have no words to explain. This is absolutely glorious one. We've seen some historical things over here. We're capturing some unforgettable moment, and this is I think Dasara is really celebrating in the Bees ground. Actually, no doubt. The moments like this will be on. Let's leave it to Amen. Ayo bangkot deh. Bangkot saya lu. Nah. Tadi saya kortawa.
Good afternoon, everyone. All right, first of all, let's have a big round of applause for all the teams. Both the teams. This has been a fantastic tournament. Fantastic match. The kind of energy we got, the kind of atmosphere we got. We'd like to say thank you to all our live panel of guests, starting with Chairman sir, our director sir, and everyone who was present here and made it a special one. Once again, big round of applause for all. All right, we're moving on to the post-match presentation. Alongside me is my co-commentator, Mr. Pavitra Naik, and yes, myself, Gaurav Kumar Panda, as we start from the best batsman of the match. It goes to Mr. Shakti, for scoring 59 kgs. And I request the chairman sir, Dr. Pramod Chandra, to present the best batsman award to Mr. Shakti. Sir, requesting you to the midfield. Listen about it. कैमरामैन आगे रे All audience, please, requesting the audience, I know it's hot, but sometimes. समस्त अनुरोध करेंगे दयाकोरी टिके आमको सहयोग करेंगे आम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन बाकी अवार्ड्स पूरा एमती कंटिन्यू करें समस्त प्लेयर मानक अनुरोध दयाकोरी प्लेयर मान जॉइन करूँ सामने प्रेजेंटेशन आरंभ करें समावेश कर ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରଖିଲୁ ଗୋଟେ ତାପରେ ଜୁମ୍ କରିବ ବୁଝିଲୁ। All right, once again like to request our chairman sir to present the best batsman award to Mr. Shakti. Let's have a big round of applause for Shakti. The best bowler, that award goes to Bibu. 3 over, 1 run, 4 wicket. Dr. Rudran Misra. Dr. Rudran Misra will present the award to best bowler. Mr. Yuga Prashad Ratha is going to give him the award. Yes. Well done, Mr. Durga Prasad. He has been very good with his captaincy and of course the way he is performing this match as well. Move on to a very important match. And it is now the match, it goes to Shakti again. And requesting Mrs. Pavitra Ratha to come in and present this proud match trophy to Mr. Shakti. Very good from Shakti. So no sixes hour. That goes surely guys. Get out. No sixes. Mrs. Sinmaratha is going to present this award to Kirot. No sixes. Wow. We have not got a lot of sixes today. It is very tough to beat those sixes, but someone who's got the better of it got the award. Of course, Kirot was fantastic there. Then, of course,
most number of boundaries. We do have got some wonderful boundaries there. It is that man who continues to shine bright in every aspect of his play, Mr. Shakti, with most number of boundaries. And of course, we'll move on to the next one. It is the runners-up. It goes to the Dreams Titan for playing that well, runners-up. And of course, before presenting that one, let's have a little talk. थोड़ा सा बात करते हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस क्या, कैसा रहा इस मैच और इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट तो ठीक ठाक था, लेकिन बच्चे लोग बहुत अच्छा खेले। हम लोग का जो एज के हिसाब से हम लोग का जो प्लेयर है वो ठीक ठाक खेले और जितना हो सके उतना ही खेले। चलिए, मैं मैच के बारे में बिल्कुल नहीं पूछने वाला। ये सेलिब्रेशन का माहौल है, कोई जीते कोई हारे फर्क नहीं पड़ता, हम सबको पता है। लेकिन इस तरह के मैचेस, इस तरह के जब टूर्नामेंट होते तो बाद में बातचीत होता है जब ऑफिस में कि हाँ अब पता है मैंने इतना रन्स किया था, मैंने इतना विकेट लिया था उस दिन चलेगा सर ऐसे ही कि ये ऐसा खेला वो ऐसा खेला, उन लोग का क्या था कि वो लोग कितनी किए ऐसे किए, हम लोग क्या वही कहाँ पे हारे, वो लोग हम लोग को प्लेयर खिलाने नहीं दिए, ये सब कितनी चलता रहता है। कभी कभी बात होता रहता है कि कुछ दिन चलेगा, उसके बाद जो काम पे हम लोग बिजी हो जाएंगे उसके बाद तो पता नहीं चलेगा कौन क्या कर रहा है कौन नहीं, मैच के सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद। जी हाँ बिल्कुल, we can be proud of the way you played though. Let's have a big round of applause for the captain of Mr. Kim, requesting Director Sir and Mr. Balram Kaur, the Director admin, to present the award to the captain of the Dreams. Of course, the rest of the teammates can join in as well. Well done, Dreams Titans. They did really well in the first half of the match. Right. All right, moving on to important awards, ladies and gentlemen, two important awards. The orange cap, yes, the orange cap, and it goes to Ranjit. It goes to Ranjit, and Mrs. Bilashini Mahapatra will be presenting this award. Mrs. Bilashini Mahapatra will present this award to Mr. Ranjit. Orange cap. Orange cap award. All right, smiling man. Well played, Ranjit. Wearing jersey number 1 and tries to be number 1 with the bat too. All right, Ranjit. Fantastic. Moving on to the next award, that is purple cap. Not before Ranjit takes a good photograph. He always smiles, the photograph will be good, don't worry about that. Alright, Mrs. Niyamita Ratha will be presenting the purple cap to none other than Sivan. Sivan, please come over and collect the purple cap. He's requesting the guest, Mrs. Niyamita Ratha, to present the purple cap to none other than Sivan. I told you it is like a family. Dreams is always a family. There's no real turnaround, and every aspect of this is nicely covered. And that's what we're all dancing with a bright smile and the purple cap looks good. Yes, the big one. The big one of all waited for this one. I know it's hot and humid, not wasting any time whatsoever. Moving on, the champion of today's game, the Tangi Super Kings. Yes. Requesting the captain of the team, Mr. Bhagwa Prasad. First of all, we'll have a little chat. Kौन कौन परफॉर्मेंस को लेकर कैसे आप बिता दो? ना हमें लास्ट टाइम जमी कहती बहुत खराब खेलु आम बहुत भल खेलु टीम बहुत खराब थिला एक्जाक्टली लास्ट टाइम आम प्लेयर मत कहते कि से बैटिंग कर पारे 30-40 रन करेंगे आम केमती बैटिंग करेंगे हमको फर्स्ट बैटिंग देवाई ना कह बट वी लॉस्ट इट मिजरेबली लास्ट दिस टाइम दे लॉस्ट इट मिजरेबली गोटे जिन तो कहुई जोटा आम डिस्ट्रिक्ट जिन जे कोच अच्छा स्पोर्ट्स एकाडेमी से खेलेंगे बिकज नॉर्मली जे डांस टीचर अच्छी से डांस कर स्टूडेंट
Giants only Sonata likhi तापर कहला हम पाओ के बैटिंग करिए that is your lookout a movie had this honey but Zubain actually plays it sporting today से कहला वो already kind of inform करती day one रो के मैंने खेली because he's a doctor also in the hospital so he knows everyone समझते से Giants से कही दिला कि मैंने खेली and से मत तीन थोड़ा सी कहला कि गुनाना का है करिए so I had to make sure कि so I'm sorry but because it was told mane prior I hope they understand. All right, last question. It's of course like employee engagement program. How do you like it, this tournament, and how it can just boost the friendship and the relationship of all of you? Absolutely great. Mane the whole point is imagine going to Bapa Papu and Thomas Khadare anti-Western. Although it's a kid game, only kid play, hasta ball hockey, all kinds of things. But there is a sportsman spirit in the game, and Shankar bhi thila. There was also spirit to quite score well, but unfortunately, because of the overconfidence they lost, and we played really well. All right, he's going to receive the winner's trophy from our chairman, sir, Dr. Pramod Chandra. Will be presenting the winner's trophy along with all others. Of course, the teams to join. Mr. Pavitra Nag, this is a very splendid moment, no doubt. This woman will be reminiscing forever. Till one year. This is the celebrating of the Dasara. This is the real celebration of the Dasara on a dream ground. Wow. Moment should be remembered. Enjoy moment. Absolutely glorious moment. I've got to mention that it's a kind of engagement program by who is a very, very phenomenal in terms of engaging the employees out there. Selection of Mr. कति खुशी है जब इनकी माहौल देखने को मिलता है बहुत खुशी लगती है वो भाग्यवती इनकी पिलाने खेली गई तो मुझे बहुत खुशी लगती है भाई इंडियन है कि नहीं अपन क्रिकेट वो खेली की बता देखते हैं होता है एंजॉय करे बनना है कौन को जो भाई क्या मैं आशा करी एमती क्रिकेट लीग आसंता जो प्रकार हमारा एम्प्लॉय माने खुशी माहौल अच्छी से कोऑर्डिनेशन से कोऑपरेशन सब बाबत और ड्रीम्स यूनिवर्सिटी गोटे अनन्य प्रति सृष्टि करूँ और रेवोल्यूशनरी हम एजुकेशन सेक्टर आम क्या गर्व करूँ गर्वित जो भी सेक्टर हुए ड्रीम्स यूनिवर्सिटी बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच कंटिन्यूस splendid tournament and on behalf of the whole production team the camera operations out there, cricket with Pavitra, all our directors, all our members out here, chairman sir, standing with the heart and still making it a success along with our directors as well. So, that's it from myself, Gaurav Kumar Panda, and of course, Mr. Pavitra. Thank you.